How dear students, आज introductory session है, and today I'm going to talk that how we are going to cover the entire statistics optional structure. देखिए, those who have taken statistics optional, it's most of the cases there are three types of students are there. One, who are currently studying statistics. Second, who have studied statistics but now they are not into that much touch. And third is who have studied a little bit long span of time of statistics, but now they're doing a job or any other government jobs. So as we have been distinct pattern of working through this particular paper of statistics over the years. So our planning of statistics is also a little bit distinctive. Okay. So किस तरीके से होगा? So first of all, we need to remember that this is not going to be an easy piece of cake for you, and but relatively much scoring part. Okay. Many of the cases people say whether it's a scoring or not and this kind of stuff. So which I would like to point out that in the previous years of our experience into teaching into this particular topic, we have seen that scoring is relatively high. Some of the cases it has been portrayed mostly the arts type of topics like anthropology, geography, history, public administration, geography. So these are like they pushed around because इसमें batch ज़्यादा आसानी से बन जाते हैं. A lot of students study it. लेकिन जैसे मान लीजिए थोड़ा elite जो paper है statistics, management या फिर economics, physics, chemistry, all these kind of thing. So this is the kind of a structure which is being followed. Okay, please check the battery. Yeah. Okay. Thank you. Okay, so this is followed by them, but in a normal sense, the scoring capability is higher in these analytical papers. Okay, जैसे मान लीजिए system wise, enlightenment wise or structure wise, what is the question of this thing they give? So that matters a lot into this statistical framework. Okay, तो किस तरीके का सवाल आएंगे उसमें तो मैं आऊंगा ही आज ये टॉपिक में. So first of all, let's just give it a basic structurization. अगर मैं इसमें थोड़ा सा आऊं कि just for example, now in this entirety of the syllabus देखिए थोड़ा बड़ा syllabus ये तो मानना ही पड़ेगा. It's going to be a relatively a big syllabus, but the thing is that the main subtopics are very small. First we'll start with the probability. ठीक है, मैं हमेशा अपना टॉपिक स्टार्ट ही करता हूँ always in keeping in this thing in mind that you don't know anything, whether you have done it statistics honors or statistics pass or elective statistics you have taken in some other courses, it doesn't matter. We will always start with the very basic part. Okay, so basic introduction of probability is very important because a lot of questions comes from it. But one of the things I've seen that the Bayes theorem based questions are nowadays coming in bunches. There are a lot of questions that are coming from this one. So we will do it in the upcoming part with this probability based questions. Nowadays they are giving it questions with A, B, C, not like they are giving directly 4 points are tossed and what is the probability of getting 3 heads. It's not in that way. Okay, so now the scenario has changed. So they are giving non-numerical questions. So that makes it a little bit harder for you to answer it as well. So this is a big concern in many of the cases. So we will do it. Alongside that, I always try to do paper one day and one day for the paper 2. So in a simultaneously we try to finish it. So paper 1 and paper 2 on a simultaneously 2-day format will be going. And we also going to make it a specialized extra sessions as well. Okay, on students to students. Sometimes we
combined some of the sessions of this thing with respect to ISS students as well, because they have a very similar type of framework as well. Okay, but not in the objective sessions, but only in the subjective parts. So if you're planning to give that examination, so this will be helpful for you as well. Okay. तो इसके बाद इसके लिए अराउंड वी ट्राई टू गिव अराउंड 6 to 7 सेशंस एट अ स्ट्रेच. देखिए आई वन थिंग मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स कीप ऑन आस्किंग मी, सर कितने मंथ में, कितने वीक में, कब, क्या एग्जैक्टली वैसे बताइए. दैट्स सब कंप्लीट बुलशिट, कंप्लीट यूजलेस काइंड ऑफ फॉर्मेट. आई जस्ट हेट दिस थिंग. व्हाई? बिकॉज देखिए ट्यूशन सेंटर्स या फिर मोस्ट ऑफ द केस, आई डोंट वांट टू नेम एनीथिंग, बट मेनी ऑफ द केसेस प्रोफेसर्स जस्ट ट्राई टू से कि भाई सिलेबस मैंने खत्म कर दिया, ठीक है, तो चाहे कैसे भी हो. तो सिलेबस तो भाई आपके पास है ही, आपके पास किताबें हैं, इतने सारी किताबें आपके घर में भी होंगे, तो कौन सी बड़ी बात है. ओके, सो थिंग इज दैट एवरी बैच शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स. ठीक है, तो बैच उसी तरीके से मैं प्रोसीड करता. सो मैं शुरुआत में आप लोगों को ये जो आज एक स्ट्रक्चर बताना, सो आई एम गिविंग अ स्ट्रक्चर, सो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द थिंग दैट it should be going, but this is not the only thing which will be done. So we will do and we will make our own performer with respect to the batches requirement, size, student strength in that way. जो वीकली हम लोग का एक स्पेशल डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, दैट हैपेंस इन जनरली a 3:1 or a 4:1 or sometimes a 1:1 depending on the requirement of the students which we do. ओके अच्छा, इसके बाद थोड़ा टॉपिक में वापस आते हैं, फिर मैं एग्जामिनेशन में जाऊंगा. स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस जो है हम लोग का, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस इज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में कंसिस्टेंसी, एमडीयू, तो इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे. ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट्स के लिए मैं एक मैथ स्पेशल सेशन इसके बीच में मैं ले लेता हूँ, आफ्टर सीइंग दैट व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ द बैच. ठीक है, ये बैच में कभी-कभार स्टूडेंट बीच में भी आते हैं, सो वी ट्राई टू गिव देम रिकॉर्डिंग ऑफ द क्लास, ट्राई टू गिव देम एक्स्ट्रा सेशंस, क्योंकि ये जो ऑप्शनल वाले होते हैं ना, इसके कभी-कभार लोगों को लगता है आज भर्ती होंगे, कल नहीं होंगे. सो आई कैन नॉट से कि इस बैच में बीच में कभी कोई आएगा नहीं. सो 3 लोगों में स्टार्ट हुआ तो तीनों में ही रहेगा. But I have a very strict policy and policy structure that no one's time, a single minute should be wasted. ये बहुत जरूरी. तो हर दिन मैं आप लोगों को एक टाइमर वाला स्ट्रक्चर बताता हूँ. सो ये टाइमर क्या होता है, तो आप एक टाइमर लेते हैं और खुद को कहते हैं 1 hour टाइम. तो उस टाइम में आप कितना पढ़ाई कर सकते हो, इसके ऊपर भी एक रिपोर्ट आप मुझे देंगे और मैं भी क्लास में इसको रेगुलर बेसिस में क्रॉस चेक भी करता हूँ. ठीक है, तो ये इन्फरेंशियल, इसमें जो आपको पढ़ाई करना है, तो इसमें 3 मैथ स्पेशल सेशंस में दूंगा. एक है कैलकुलस सेशन होता है. ठीक है, इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस आपका सिखाया जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशंस भी आएंगे, और लिमिट्स, एडवांस लिमिट, ये सब, जैसे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 1 + 1 / x होल टू द पावर x, इस टाइप का सारे लिमिटिंग का वैल्यू किस तरीके से आते हैं, लिमिट सीरीज, ये सब के ऊपर बहुत सारे सवाल रहते हैं. इधर उधर का अगर आपको पता नहीं रहेगा तो जैसे ये मुश्किल है. जैसे मान लीजिए एमएलई में, ओके, तो ये एस्टिमेटर में मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर में कैसे करेंगे अगर आपको पार्शियल डेरिवेटिव भी नहीं आता है. सो एल इज अ फंक्शन, देन log of l, एंड देन यू डू 1/l del l del alpha, इन दैट वे यू डू. ये आप कैसे करेंगे, तो इसलिए मैथ स्पेशल सेशन में रखता हूँ. फिर आ गया इंटीग्रल कैलकुलस, इसके साथ आ जाता है मेरा. तो इंटीग्रल कैलकुलस में भाई बीटा गामा बहुत जरूरी है. बीटा एंड गामा फंक्शंस आर विल बी देयर, and there will be one session on the basis of 2 sessions rather say on double and triple integral. Okay, and derivative of summation, ये सब भी आपको जानना पड़ेगा. समेशन के ऊपर डेरिवेटिव कैसे होता है, ये सब बहुत जरूरी है. ठीक है, एंड नॉर्मल इंटीग्रेशन भी थोड़ा जानना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय लिमिट, ये सब, लिमिट चेंजिंग, यूवी प्रिंसिपल, ये सब भी करना पड़ेगा. सो वी गिव यू स्पेशलाइज्ड स्टैट सेशंस, मैथ सेशंस एज वेल. क्लास जब चलेगा आप लोग मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, उसमें नंबर दिया रहेगा, अभी मैं नंबर आपके साथ शेयर कर दूंगा, 9062395123. इसमें क्या होता है, सिर्फ मेरे क्लासेस क्या है, इट्स नॉट लाइक दैट थिंग, इट्स एन ऑनलाइन क्लास, यू आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट, बट इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी. ये मैं हमेशा कोशिश में रखता हूँ कि ऐसा फीलिंग लगे. ठीक है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, this is a small batch, around 50 to 20 students maximum I take. So that's why you always are free to ask me. You just unmute and ask me questions and be happy.
Okay, so there is no problem on that. अच्छा, कुछ कुछ नए टॉपिक्स भी हैं जो आप लोगों ने, जैसे कोलोमन ऑफ टेस्टिंग, टेस्टिंग के ऊपर मैं बहुत सारे एक्स्ट्रा सेशंस लेता हूँ एंड आई टेक टेस्ट ऑन दैट एज वेल. तो ये करने के साथ साथ पैरेलली जो पेपर 2 में मैं फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करूंगा वो है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिलेबस में इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स सबसे पहले दिया हुआ है, बट आई स्टार्ट विद ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक. देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट लोग का इस एरिया में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रह ही जाता है. ठीक है, तो इसको पहले हम लोग को ठीक करना होता है. सो वी ट्राई टू फिक्स इट, एंड इफ इट इज नॉट गेट फिक्स्ड वेरी इजीली देन वी विल डू अ डबल प्रेशर ऑन दैट. ओके, लीनियर प्रोग्रामिंग, सिंपल एलपी, ये सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर हम लोग करेंगे. ओके, एंड रिमेंबर दैट गेम थ्योरी का भी यहाँ बहुत सारे एप्लीकेशंस रहेंगे. सो देयर विल बी डेडिकेटेड 2 सेशंस ऑन गेम थ्योरी एज वेल. ये भी मैं आप लोगों को दूंगा. ओके, सो दिस इज द थिंग. नेक्स्ट इज उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स. यस, इस बार इकोनॉमिक्स प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, लेकिन याद रखिए ये बेसिक थियोरेटिकल इकोनॉमिक्स नहीं, इसे क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स कहते हैं. तो डेमोग्राफिक डेटा ये सब के ऊपर कैलकुलेशंस काफी रहेंगे और थोड़ा बहुत इकोनोमेट्रिक एप्लीकेशंस भी रहेगा. ठीक है, सो इसके ऊपर आपको करना है थोड़ा. कभी कभार आप लोग कहते हैं गुप्ता कपूर से सर हो जाएगा कि नहीं. गुप्ता कपूर इज अ गुड बुक, but only for the starting part, and especially the applied part. ये जो है, जो second paper is mostly applied part, इसमें उतना ज्यादा भी चीजें नहीं दिया हुआ है. So I will give you the notes on this, and every class में ये जो चीजें मैं कराता हूँ, so this all gets recorded. Okay, so every class has been recorded, and everything which I write here, ये बहुत जरूरी है. So that will also be given to you. तो अगर आप ये जो देखिए इतना तक मैंने अभी आज जितना भी समझाया है, तो ये एक मेरे रिकॉर्ड में रह रहा है और ये भी मैं शेयर करता हूँ. तो सर का पूरा होल नोट्स ऑफ द क्लास, द होल नोट्स ऑफ द क्लास will be in recorded version in my handwriting, and other professors also do it in that way. तो ऐसा शायद ही कोई करता है कोई भी सेंटर में कि like the entire note student also gets to write on your own and you get the classes full write up. No matter what, how long write up, long things which we do. So this will always be given to you. Okay. So as big as possible, as small as possible. So we always try to do that. इसके बाद अच्छा ये टॉपिक ऐसे पैरेलली जाते वक्त नाउ थोड़ा सा आगे जाने के बाद नाउ वी विल ट्राई स्टार्ट टेस्टिंग. देखिए इसमें कभी कभार लोगों को लगता है कि सब्जेक्टिव है तो ज्यादा लिखने पर ज्यादा मार्क्स है, ऐसा कुछ नहीं है. Okay, so here also analytical writing is needed. Okay, so whether it's a paper 1 or paper 2, so it's simply the analytical write up how good you are. ऐसा नहीं कि पहले आप थ्योरी दो और उसके बाद थोड़ा सा सम्स करो और उसके बाद थोड़ा उसका. But one thing we will teach you, that is statistical interpretation. Statistical interpretation, which is very important. Many of the cases people don't write it, they just do it and they finish it off. In this kind of optional papers, they want a student to have a specialized flair into that. It's quite like taking an honors, taking a specialization of a paper. So you need to have a better knowledge in that. So the interpretation part, ऐसे last में मेरा एक special theory है, जैसे statistical interpretation बोल के बहुत सारे questions में जिसमें दे सकते हैं वो, that also I will tell you. Okay. अब फिर से पेपर 1 में अगर वापस आएंगे, इसके बाद हम लोग जाएंगे सैम्पलिंग थ्योरी एंड डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में. देखिए इंटरनेट में या फिर गूगल में या फिर दूसरे वेबसाइट में जो सब दिया रहता है, दिस इज ओनली द सिलेबस, बट द रियल स्टोरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज अ लिटिल बिट सैडर. ओके, याद रखिएगा कि अगर ओल्ड एंड न्यू पेपर को सिर्फ कर लिया और वही से काम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है. ओके, पास्ट ईयर सिर्फ करने से ज्यादा काम हो जाएगा ऐसा नहीं है, बट पास्ट ईयर से रिपीट नहीं होता ऐसा भी नहीं कहूंगा. देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम द पास्ट ईयर, यू कैन गेट अ गुड अंडरस्टैंडिंग. तो हर एक पास्ट ईयर का सारा पेपर सॉल्व होगा. ओके, so all the past year questions will be solved. Okay, and you get a sheet like this every class, and where we will be giving you that thing, and feedback structure भी है. जिस तरीके से इस तरीके से आप लिख रहे हैं एंड किस तरीके से आपको लिखना चाहिए, दिस इज लाइक योर राइट अप एंड दिस इज इट शुड बी राइट अप. तो ये भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे.
ओके, सो परफॉर्मेंस एनालिसिस इस तरीके से होता है. पीडीएफ ऑफ द क्लास आई हैव टोल्ड ऑलरेडी. रिकॉर्डिंग, हर क्लास भी रिकॉर्डेड रहेंगे. ठीक है. अच्छा, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में कभी लोगों का सवाल रहता है कि किस तरीके से करेंगे. सो आपको ब्लॉक डिजाइन का हर एक स्मॉल पार्ट को करना है, क्योंकि यहाँ पर डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में सम से ज्यादा थ्योरी आता है, और थ्योरी मतलब एनालिटिकल थ्योरी है इसमें. ठीक है. तो ये सबके ऊपर भी काम करना है. उसके बाद हम लोग जाएंगे, देन वी विल गो टू द मल्टीवेरिएट. ये थोड़ा सा पेचीदा है, थोड़ा सा टफ भी है. सो द मल्टीवेरिएट एंड लीनियर इन्फरेंस में इसके बाद जाएंगे, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. Okay, so this is the scenario, and after we finish this thing off in the parallel zone में, इसके साथ साथ official statistics and also will be done parallelly as well. Mock test में हम लोग एक जो testing लेते हैं. So I told you that I'm going to check the copies, but alongside that I'm also going to say you that it's a cumulative test. पहले topic 1, दूसरे test में topic 2 and 3, and also topic 1 is included. Then 4 and 5 and 6, then 7 and 8. In that way, we keep on adding the topic, and at the end of the day, you are getting ready for the entire paper as well. So this is the scenario. और भी रेगुलर बेसिस में क्लास जब हम लोग आज शुरू करेंगे तो उसमें और भी बात करेंगे. We'll start with probability today. Okay, so this is the introductory part of how we are going to do it in this year.